Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial of the day will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 3rd of March. The first topic is clear roadmap for 5G auction. The Prime Minister himself was addressing the budget webinar and he has said that what the government has focuses the roadmap and how the execution of 5G would go ahead. Second, Russia bid to provide safe passages to India. We have seen the crisis ongoing in the Ukraine and many of the Indians too did not stand in the region. Third, next wave cannot be predicted. This is what the expert has to say in this particular regard, and this is the prediction with regards to the fourth COVID wave. The second last news is that is New India Assurance is ensuring the Kudankulamplant in participations with the global participation, right? And the last is an editorial Pensiontension. So we'll see the recent decision of the government of Rajasthan, what they've decided and how this would be providing another leap of problems, or you can say the execution part in terms of the pension. Apart from this, at the end of this video, there will be MCQ questions. These questions based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And before we start, if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. And we have also launched our updated app that is 2.0. You can download this app and you'll get a lot more other facilities in this app itself. So do check the description section जहाँ पे मैंने एक dedicated link दिया है where you can directly download that. First news of the day, clear roadmap for 5G auction. This particular news is important for General Studies paper 2, that is government policies and intervention for the development of various sector and issues arising from it, design and implementation. So Prime Minister was addressing a webinar where he said कि जो बजट एलोकेशंस की गई है साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए इन दिस यूनियन बजट इट हैज given a clear vision of 5G spectrum auctions and the scheme that has been proposed to design led the manufacturing with a strong 5G ecosystem, right? This is what the Prime Minister has to state in this webinar. Although 5G की अगर बात करें स्पेक्ट्रम की, बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं इंडिया में जो ऑपरेट कर रही हैं, उन्होंने ऑलरेडी ट्रायल की है, ट्राई के साथ अप्रूवल्स भी हुई है एंड वेरी सून वी कैन सी दैट 5G इज कमिंग. बट जो एग्जीक्यूशंस पार्ट है, जो पॉलिसी फॉर्मुलेशंस की पार्ट है, उसमें भी गवर्नमेंट ने काम की हुई है. सो वेरी सून वी कैन एक्सपेक्ट द रोल आउट ऑफ द 5G सर्विसेज. नाउ एम्फेसिस ऑन द सनशाइन सेक्टर, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर को सनशाइन सेक्टर बताया गया है एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो द प्राइम मिनिस्टर हैज हाईलाइटेड that कुछ सनशाइन सेक्टर है which include AI, that is artificial intelligence, geospatial system जिसको GS system भी कहते हैं, drone, semiconductor, although semiconductor की shortage globally देखी जा रही है, but then also for India this is considered to be a sunshine sector, space technology, genomics, pharmaceutical, clean technology and 5G. So this together comprises the sunshine sector. So आपसे ऐसे भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है which among the following can be the part of sunshine sector, right? Now the budget has laid a clear roadmap जहाँ पे 5G spectrum को लेकर के बात की गई है. Even the production link incentive scheme, that is a PLI scheme, has also been proposed for the design-led manufacturing for the strong 5G ecosystem, right? So government की visions जो है वो clear है. Definitely very soon it would be rolling out the 5G ecosystem or you can say the 5G services, but उसके जो procedurals delay हैं, जो administrative work है, उसके लिए भी काम करने की ज़रूरत है. Although trials major cities में हो चुके हैं, even first it would be rolling out to the major cities, tier 2 cities, उसके बाद और further इसको expand किया जाएगा. Now the Prime Minister has asked the private sector to increase their effort in this area, and definitely the public-private partnership is something which is very important at this point of time, where 5G is something which would be a game changer for the generation of internet services that we'll be using. Technology की बात की गई है, technology for ease of living, how the technology should be prioritizing the ease of living for every citizen in our country. So the Prime Minister said that there is a need to emphasize on how to maximize the use of technology for ease of living. Technology upgradations ऐसी हो जो हर एक इंडिविजुअल को ease of living की तरफ प्रमोट करे. The Prime Minister said that the field of economy and the vision is linked with the area like digital economy and fintech. In the recent time, we have seen
जो बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट फिनटेक है, अगर कुछ एग्जांपल्स की मैं आपको बताऊं, गूगल पे इज ऑलरेडी देयर इन इंडिया, फोन पे इज देयर, पेटीएम इज देयर, राइट, एंड इवन भारत पे द न्यूली लॉन्च्ड वन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिनटेक्स कंपनीज के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे गेटवे है जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम डिजिटल इकोनॉमी इन आवर कंट्री। Similarly, जो advanced technology है, it has a huge role in the infrastructure and public delivery system and its related vision. And the Prime Minister has also mentioned the investment in the house construction, चाहे वो railway हो, airways हो, waterways हो, even optical fiber, which is something very important. जो government की fiber net की जो project है, right? The fiber net project, which is providing broadband connectivity or fiber connectivity to the rural area also, is something very important at this juncture. Now, use of geospatial data, किस तरह से इसकी यूज होनी चाहिए, इसकी enhanceability को बढ़ाने की जरूरत है, and even this data is going to help government as well. So the Prime Minister has called for private sector to maximize the advantages. No, recently the government has also liberalized the process, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के लिए exemptions दी गई हैं private players को, and this exemption will provide an infinite opportunities to make the sector more reform, right? And Prime Minister emphasized the importance and robust data security framework in our country, and he has asked to gather a roadmap जहाँ पे एक standard set की जाएगी, and norms would also be finalized that how the data privacy or the robust data security mechanism should be there in our country. Now, looking into the history of the generations of internet connectivity, किस तरह से 1G, 2G, 3G और 4G तक evolve हुई है. So 1G was actually started in 1980, right? This was an analog voice where human to human voice was possible, and even early mobile phone was introduced at this point of time. Then after a decade, we have gradually moved to 2G in 1990, where digital voice was incorporated with low speed data, and voice and some text was also possible. Then after 10 years down the line, 3G was there, and 3G called for मोबाइल ब्रॉडबैंड हाई स्पीड डेटा की बात की गई और इंटरनेट एक्सेस अलाउ की गई. नाउ इन 4G, फास्टर एंड बेटर 3G कनेक्टिविटी, IP बेस्ड नेटवर्क हुई, हाई स्पीड इंटरनेट स्ट्रीमिंग एंड ऐप downloading and working was possible. Now India would be gradually moving to 5G in 2020. Because of the COVID-19, some parts were delayed, but we can expect very soon rollout of the 5G. यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी डिवाइस होगी, सेंसर सिस्टम होंगे फॉर कंज्यूमर, गवर्नमेंट एंड बिजनेस, एंड ऑल्सो द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज समथिंग विच इज possible with this, right? And high speed internet would be provided. So this is how the evolutions of the technology from first generation to fifth generation has taken place. Moving to the other news, that is Russia bid to provide safe passages to India. This particular news is important for General Studies paper 2 in mains. Effective policies for developed and developing countries on India's interest and India's diaspora. So government of Russia ने recently एक important official statement में कहा है that they are working to intensify, जहाँ पे humanitarian corridor create की जाएंगे so that जो भी बच्चे फंसे हुए हैं यूक्रेन के regions में like खार्किव, सुमी और अदर कॉन्फ्लिक्टेड जोन्स जो हैं यूक्रेन के, वहाँ से इंडियन बच्चों को बाहर लाया जाएगा. स्पेशली बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकल ग्रेजुएट्स वहाँ से करते हैं, दे आर परसुइंग देयर मेडिकल कोर्सेज, इंजीनियरिंग कोर्सेज. दीज स्टूडेंट्स आर स्टैंडर्ड ओवर देयर, स्पेसिफिकली इन द रीजन ऑफ खार्किव, सुमी एंड अदर कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज. सो रशिया ने कहा है कि वो इन्वेस्टिगेट भी करेंगे. एक डेथ हुई है 21-year-old इंडियन की इन द यूक्रेन सिटी ऑफ द खार्किव. ही वॉज अ मेडिकल ग्रेजुएट. Actually, he was pursuing his MBBS education from there. So Russia has said that they are actively considering providing the humanitarian corridors to the Indians staying in the Ukraine, right? Specifically अगर बात करें खार्किव रीजन की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 मिनिस्टर्स भी अपॉइंट किए हैं. दे हैव बिन डिप्लॉयड टू मेनी अदर रीजन्स, जहाँ पे रिसेंट में जो C-21 ग्लोब मास्टर हेलीकॉप्टर्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, उसके थ्रू बहुत सारे स्टैंडर्ड इंडियंस को लाया गया है इंडिया वापस, राइट? सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट नंबर विद द इंडियन स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल. Now, there's a problem in the evacuations. What is the problem? So, India has rushed a team of officials from Moscow to the Russian city of Belgorod, and even located near the Ukraine border. और यहाँ पे कहा गया है that they were unable to reach out to the Indian national in the Kharkiv because of the Russian bombing.
सो बॉम्बिंग इज टेकिंग प्लेस। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है जब तक वो अपने सिटीजन को इवैक्यूएट ना कर लें इस तरह के प्रोसेस को वहाँ रोकने की जरूरत है। दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन इवैक्यूएशन ऑफ मेनी इंडियन स्टूडेंट हु आर स्टैंडर्ड इन द रीजन, स्पेसिफिकली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूक्रेन और इस तरह के जो खार्किव के रीजन्स हैं वहाँ पे। Now, they were estimated that 20,000 Indian are stranded in Ukraine. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने एडवाइजरी में ये भी मेंशन किया दैट दोज ऑफ देम आर स्टैंडर्ड शुड बी मूविंग अहेड टुवर्ड्स द बॉर्डर। ऑलमोस्ट 12,000 हैव लेफ्ट द कंट्री सो फार एंड रिमेनिंग 8,000 इंडियंस दे आर लिविंग इन द खार्किव सुमी के जो रीजन्स हैं वहाँ से उनको बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। एंड ऑल इंडियन नेशनल हैव लेफ्ट द कैपिटल कीव, जो यूक्रेन की कैपिटल है वहाँ से ऑलमोस्ट सारे लोगों को हटा लिया गया। नाउ इम्पैक्ट क्या क्या होंगे जो सैंक्शंस लगाई गई है ग्लोबल कम्युनिटी द्वारा। मीन अपार्ट फ्रॉम द कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, फ्रांस ने जो सैंक्शंस लगाए हैं उसकी रशिया इकोनॉमी पे एक्चुअल में क्या इम्पैक्ट हो रही है। सो द रशिया इकोनॉमी वाज डूइंग वेल डिस्पाइट द सैंक्शन। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ रशिया हैज टू से। दे आर trying to protect it, they're trying to defend as a part, but definitely बहुत सारे repercussions हैं जो रशियन इकोनॉमी को देखने पड़ेंगे। So the Russia official has said that the economy is stable and it will withstand with the pressure that they are experiencing and about to experience in the future. Now, Nextwave cannot be predicted. This is what the expert has to say. This particular news is important for General Studies paper 2, and it's issues related to development and management of health. So recently, some expert said basically they would be meeting with the government of India, and it is expected that they would be meeting within a week to discuss a strategy to improve the response in the new surge of the COVID-19 that is anticipated in July, right? तो एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है एक मॉडल को जो कि आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स ने डेवलप किया। एंड दे सेड दैट फोर्थ कोविड-19 वेव जो है वो जून के आसपास पीक करेगी, but there is no substantial evidence to this that this is going to happen. The reason being independent expert ने इसको criticize किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली एक मीटिंग भी करने वाली है जिसपे पूरी रोड मैप डिसाइड की जाएगी that what should be the future course of action if anything happens in this time. So the number of new COVID wave in India has been dropping steadily. ना आईआईटी कानपुर की एक स्टडी थी फोर्थ कोविड वेव को लेकर के जिसमें एक सूत्रा मॉडल की भी बात कही गई है। विल डिस्कस दैट आल्सो। सो द रिसर्चर फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज इन कानपुर दे सेड and they have predicted that the fourth COVID-19 wave is going to begin from June 22 and it is about to peak by August 23rd and it will end by October 24th. This is what the anticipation was, but again it's dubious, so, you can say the prediction. No one is allowing to expect this fact. बहुत सारे independent expert हैं जिन्होंने इसको मना कर दिया इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से। So IIT कानपुर के जो प्रोफेसर्स हैं, they are absolutely no way to forecast the time behind the सूत्रा मॉडल। ये सूत्रा मॉडल डेवलप की गई थी IIT कानपुर और IIT हैदराबाद के प्रोफेसर्स के द्वारा। सूत्रा मॉडल स्टैंड फॉर ससेप्टिबिलिटी, अनडिटेक्टेड, टेस्ट पॉजिटिव एंड रिमूव्ड अप्रोच, राइट। सो अमॉन्ग विच एक ये मैथमेटिकल मॉडल है जो पेंडेमिक्स में किस किस सिचुएशंस पे कितनी पीक आएगी, क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, किस तरह के बेसिकली प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में प्रिडिक्शंस देती है। नाउ प्रिडिक्शन ऑन द फोर्थ वेव की अगर बात करें, जो आईआईटी कानपुर की टीम है, दे हैव प्रिडिक्टेड दैट द फोर्थ वेव इज अबाउट टू हिट इंडिया। और जो सबसे बड़ी क्वेश्चंस है वो एक कंटेजियस ओमिक्रॉन की जो वेरिएंट है BA.2 को लेकर के है, दैट हैज लेड टू द सर्ज इन आवर कंट्री, राइट। सो रिसेंट स्टडीज हैज शोन दैट जो BA.1 है दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ BA.2 सब वेरिएंट। तो जब BA.1 ऑलरेडी बेसिकली सर्कुलेटिंग थी, तो क्या BA.2 की जो वेव है जो वापस में सब वेरिएंट है वो इतनी इफेक्टिव होगी? सो हेंस इट इज़ लाइकली दैट मेजर वेव ऑफ इन्फेक्शन इज गोइंग टू एक्सपेक्टेड एंड इवन इट इज़ एक्सपीरियंस जो BA.1 वेव है उसमें बहुत ज़्यादा रिपरकशन होंगे या नहीं होंगे, ये भी अगेन अ डिबेटेबल इशू। सो वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन दिस पार्ट, लेट्स सी व्हाट गवर्नमेंट हैज़ टू से, बिकॉज जो एक्सपर्ट कमेटी है वो भी अपनी ओपिनियन साझा करेंगी। Now, June की projections, as we have discussed, you can read out in the entire basically infograph. This is the model data that was published, and the model indicated curve to peak from 15th to 31st. और epidemiologist और जो साइंस के लोग हैं वो इस अभी भी सूत्रा मॉडल पे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखते, right? Now, NIA to set insurers Kudankulamplant with the global participations. This particular news is important for General Studies paper 2. Government policies and intervention for the development of various sectors
and issues arising from its design and implementations. तो जो न्यू इंडिया एश्योरेंस है, इन्होंने कहा है कि दे वुड बी कंप्लीटिंग द प्लेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कवर टू द 3 यूनिट्स ऑफ 4 कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट विच इज देयर इन द तमिलनाडु, राइट। तो यहाँ पे बात की गई है 43,000 करोड़ रुपीस के आसपास एक्सपेक्टेड है, जो कि पूरी सम अश्योर्ड की जाएगी। एंड वी हैव टू सी दैट हाउ थिंग्स आर वर्किंग, बिकॉज फॉर इंडिया इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो प्रोजेक्ट है कुंदाकुलम प्रोजेक्ट्स, this would be something that would be providing a future roadmap for our country, right? तो किस तरह से ये होंगे इसे देखना काफ़ी important होगा। And even this cover likely to be executed in participation with the global insurance also. So not only in India, जो तमिलनाडु में ये प्लांट हैं उसके लिए और भी ग्लोबल इंश्योरेंस को भी इंक्लूड किया गया। सो NIA न्यू इंडिया इंश्योरेंस विल प्रोवाइड द प्रॉपर्टी कवर, जो वहाँ की प्रॉपर्टी है उसकी कवर देगी। एंड इवन द पार्टिसिपेशन इज विद द स्टेट ओन GIC-RE, दैट हैज वोन द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया की जो मैंडेट है उसको। एंड इवन द कॉम्पिटिटिव बिडिंग वॉज देयर फॉर द नवंबर। तो GIC ने कहा है दे हैव ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन री इंश्योरिंग द फर्स्ट 2 यूनिट ऑफ द कंदकुलम प्रोजेक्ट। एंड इफ इट इज मैंडेटरी की जो 5% ऑब्लिगेटरी है टर्म्स ऑफ रेफरेंस वो भी वो रखेंगे। एंड इवन अगर वो शेयर नहीं मिलती है देन NIA वुड बी डिसाइडिंग ऑन इट्स शेयर, राइट। तो शेयर प्रपोर्शनेटली है, दोनों कंपनीज मिलकर काम करेंगी। एंड इफ नॉट देन NIA वुड बी ओवरटेकिंग द पार्ट ऑफ द GIC-RE. Now, as per the current regulations, जो GIC है, they have refused fully or partly to the NIA, जहाँ पे ये प्रेफरेंस दी गई है फॉरेन अप्रोच ब्रांचेस को भी। एंड इवन द री इंश्योरेंस वुड हैव टू बी प्रेजेंट इन द गिफ्ट सिटी। एंड लास्टली द क्रॉस बॉर्डर इंश्योरेंस विच इज देयर विद द IRDA, राइट। नाउ इंश्योरेंस विल कवर द प्लान दैट वुड बी प्योरली इंश्योरेंस ड्रिवन, जहाँ पे एविएशन इंश्योरेंस होगी, प्राइमरी इंश्योरेंस होगी, एंड 90% ऑफ द हाई वैल्यू विल कवर द लास्ट सम एंड मोर देन अ वन ग्लोबल इंश्योरेंस। सो मोस्टली इट वुड बी मोर इंडिजिनस, जो इंडियन ब्रोन कंपनी है उनके थ्रू ही रेफरेंस की बात की गई है। बट इफ इट इज रिक्वायर्ड द ग्लोबल कंपनी कैन ऑल्सो बी अ पार्टिसिपेंट इन दिस। Now, looking into the India's planning for the huge increase in nuclear power, almost 20 ऐसे nuclear reactors हैं जो कि proposed हैं, and almost 48 new जो reactors हैं that would be the part of it, right? तो अगर आप देखें starting से first we have in Rajasthan, you can see the complete details. The red in color is the operating, yellow in color is under construction, and the blue in color is proposed, right? So this is operating. Rajasthan is operating. Gorakhpur is like proposed. Narora, Mansi Bhavanshara, again Kakrapara, this is there in the region. Mithai Vidhi, Kaiga, Jaitpur, then again in Kundakulam, Kapalakam, Tarapur, and these are the Hirapur, Kovakuda, and Chutka and Bhimpur, right? So these are some of the areas upon which the nuclear power plant has been operating. एंड पॉसिबली इंडिया की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, ऑलमोस्ट 14 फोल्ड इंक्रीज की बात की गई है। सो डेफिनेटली दिस इज अ रोड मैप दैट इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड विद 63,000 मेगावाट्स की कैपेसिटी बढ़ाने की बात की गई, राइट। हाउ मच? बाय 63,000 मेगावाट ऑफ द कैपेसिटी। Now, Pensiontension, this particular news is important for General Studies Paper 2, Function and Responsibility of Union and State. This is basically an editorial which has been written by Rajiv Maheshwari and Renuka Sen. Rajiv Maheshwari is a civil servant and Renuka Sen is a fellow at NIPFP. So what they are trying to discuss in this editorial, जो राजस्थान ने recently withdrawal किया है NPS से और पुरानी पेंशन स्कीम्स को लाने की बात की है, उसके बारे में डिस्कशन है, उसकी क्रिटिसिज्म की गई है, उसके बारे में एक वे फॉरवर्ड बताया गया। फिजिकल प्रेशर ऑन गवर्नमेंट क्या होगी इस डिसीजन के बाद, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कैसी होगी पेंशन्स पे, क्या क्या कंसर्न्स हैं और वे फॉरवर्ड। सो द एंटायर एडिटोरियल फोकसेस अपॉन द पेंशन इश्यूज। सो एक डिफाइंड पेंशन बेनिफिट स्कीम है जिसको पेंशन स्कीम बोलते हैं शॉर्ट में, which has guaranteed the pension or retirement are facing a crisis of fund across the world, right? इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल को छोड़ के जिन्होंने एनपीएस को पूरी तरह से स्टार्ट किया हुआ है सिंस 2004, राइट। सो वेस्ट बंगाल इज द ओनली स्टेट विच इज नॉट यूजिंग एनपीएस, दे आर जस्ट दे आर ऑन द ओल्ड पेंशन स्कीम, दैट इज द डिफाइंड बेनिफिट स्कीम जो है पेंशन की उस पर। सो द एसोसिएटेड इश्यूज विद द लाइबिलिटी और गवर्नमेंट जो इनकर करती है उनके प्रति ये कैसे एग्जीक्यूट होगी फाइनली, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। Now, Rajasthan has withdrawn from the NPS and they said recently the Chief Minister of Rajasthan, Mr. Gehlot, has informed the legislature, the state legislation में उन्होंने कहा है कि वो रिवाइव कर रहे हैं वापस से पुराने पेंशन स्कीम को।
So the government has Rajasthan has announced that the old pension scheme would be revived. And why the government of Rajasthan has decided to withdraw from the NPS और डाइवर्ट कर रही है पुराने डिफाइंड बेनिफिट जो पेंशन स्कीम्स हैं उन पे. So at first instances, it may be seem that the decision is prompted by the election which is due in next year. तो एक इलेक्शन स्टैंड या फिर इस तरह के जो पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए भी डिसीजन लिए जा सकते हैं, बट इसके क्या क्या रिपरकशन होंगे वो आपके लिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है. स्टेट की इकोनॉमी को वो कैसे इम्पैक्ट करेगी. अब फिजिकल प्रेशर्स की अगर बात करें गवर्नमेंट पे, सो द फिजिकल प्रेशर ऑफ द स्टेट आर बियरिंग द बर्डन बोथ एक्सपेंडिचर पार्ट में जहाँ पे कंट्रीब्यूशन है एनपीओ को लेकर के भी एंड इवन फॉर द प्रेजेंट सैलरी होल्डर्स ऑल्सो. सो फॉर एग्जाम्पल जो करेंट नंबर है प्रोफेशनल फैमिलीज के और पेंशनर्स की, दिस इज अराउंड 5.6 लाख और हर 30,000 जो है वो इंक्रीज होंगे बाय 2030. ऑन द अदर हैंड अगर एनपीएस की बात करें, जो लोग एनपीएस में इनरोल्ड हैं, this is 5.5 lakh. Again, here the number is also increasing every year by 30,000, right? तो अगर assume करें तो जो नेट इंक्रीज है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में, अगर वो एडजस्ट भी नहीं होती, सिर्फ रिप्लेस होती है, तो भी 30,000 के आसपास होनी है बाय 2030. ना इसके गवर्नमेंट की स्पेंडिंग क्या होगी इन पूरे बेसिकली जितने भी एनपीएस की कॉन्ट्रीब्यूशंस है या फिर वापस से अगर पुराने पेंशन पे जाते हैं तो गवर्नमेंट अभी कितनी बियर कर रही है. सो द गवर्नमेंट स्पेंड अराउंड 23,000 करोड़ रुपीज इन द पेंशन, राइट. जो करंट हैज मेड कंट्रीब्यूशन अराउंड 29,000 करोड़ टू द एनपीएस. तो 23,000 करोड़ स्पेसिफिकली जाती है पेंशन के लिए, बाकी एनपीएस की जो गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन है वो 29,000 करोड़ रुपीज है. Now this expenditure will rise each year and at least 7.5% up to late 2030. Now राजस्थान की जो करंट स्पेंडिंग है that is around 23,000 करोड़ on pension and 60,000 to 93 crore rupees on salary and wages also. So you can see this number is pretty higher, जो 56% of उनकी जो taxes है और non tax revenue को comprise करती है. So big number, big percentage. Now some concern that was raised, so it was genuine concern that कि जो NPS के employees हैं उनको भी इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे ऑल्सो आर लुकिंग फॉरवर्ड विथ अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम. अगर एनपीएस से बाहर जाते हैं तो क्या ये स्कीम्स के बाद उनकी जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो कैसे इन्वॉल्व होगी, कहीं जो प्रॉब्लम है उनको इम्पैनल करने में वो कैसे होगी. तो देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द पेंशन अमाउंट फॉर द रिटायरमेंट, बिकॉज इवन दोज हु हैव ऑलरेडी बीन इन्वॉल्व इन द एनपीएस उनकी कैलकुलेशंस कैसी होनी है, ये भी कंसर्न है. Now the employees however has been export concern regarding the pension that can affect the market fluctuation, because एनपीएस में अभी तक जो परसेंटेज मिली है रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 9% के आसपास है. एंड दिस 9% इज प्रीटी गुड ऑन द हायर साइड, बिकॉज इंडिया में जो इन्फ्लेशन है दैट इज क्लोज टू 5 to 6%, राइट. इवन 3% ऑन द हायर साइड दिस इज देयर. तो ये कहीं ना कहीं जो ईपीएफ है, पीपीएफ है और फिक्स डिपॉजिट्स हैं उनसे काफ़ी ऊपर है. Now there were legitimate concern regarding the employees and the government की जो contributions है that has not been transferred or invested at this time. Now even the जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं उन्होंने भी हाईलाइट किया ये प्रॉब्लम को, जहाँ पे इनसफिशेंसी देखी गई है इन टर्म्स ऑफ टाइमली पेमेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. जो स्टेट की फाइनेंसेज हैं, इवन फिजिकल डेफिसिट इज देयर ऑन द पेपर. So timely implementation of any policy is something very important, and if not implemented, it will definitely call for a lot more problem to the employees in future. Now, way forward की अगर बात करें, there is a need to amend and penalize such delays, जहाँ पर private companies are prosecuted for delays and transfer of their employees to the GPF contribution. जो ग्रेचुटी प्रोविडेंट फंड है उनके तरफ भी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हमें देखने होंगे. एंड गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड are famous for their next election oriented transmission. This is what the editor has to convey in this editorial. और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इनएविटेबली अट्रैक्ट करेगी एक इमीडिएट रिलीफ, नॉट ओनली टू प्रोवाइड पेंशन कंट्रीब्यूशन अंडर द एनपीएस ऑल्सो. So this is the clash that is between the NPS and old pension scheme, how it would be integrated, right? And even the medium term, it is likely that the fiscal disastrous of the country is going to happen. So एक स्टेट्स के बाद जो दूसरी स्टेट्स हैं क्या वो भी करेंगे, उसके लिए क्या फिजिकल रोड मैप है स्टेट के पास, या क्या स्टेट्स के पास उतनी एक्सपेंडिचर है जो वो कर सकते हैं. सो दिस इज अ बिग क्वेश्चन, बिकॉज इफ दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद दिस वी हैव टू ऑल्सो इंश्योर कि जो वेलफेयर प्रोग्राम है जो वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लिए किसी तरह से इम्पैक्ट ना हो. Now moving ahead with the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of yesterday questions. For first question, the correct option is B. For second question, the correct option is C. Today's MCQ for practice, आपको बताना है National Science Day क्या होती है. This is celebrated every year to commemorate the discovery of Newton law. The theme for 2021 is future
STI, that is Science, Technology, and Innovation Impact of Education, Skill, and Work. So do check it out, which among the following is the correct option. Second, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क नीति आयोग ने इसे स्टैब्लिश किया है in September 2015, and this framework outlined the methodology to rank institution across the country, right? So this would be something important क्योंकि इंडिया में रैंकिंग इसी के थ्रू की जाती है, and this provide a roadmap of how the future education, the higher education, is going ahead with India. So this was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQ questions. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.